लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में। लेट अस चैलेंज इंडिया, एनडीए, कैन यू चैलेंज इंडिया? दो चीजों की गारंटी मिलती है। एक तो ये अपनी दुकान पर जातिवाद का जहर बेचते हैं और दूसरा ये लोग असीमित भ्रष्टाचार करते हैं। आजकल ये लोग बेंगलुरु में जुटे हैं। Namaste, Jai Hind and welcome to this edition of The Right Stand. I am Anand Narsimhan. Ladies and gentlemen, the daggers are drawn, the battle lines are very clearly drawn between the two entities who are very clearly saying that we are not going to let go. This is the 2024 Lok Sabha polls. It is going to be versus the NDA, that is the National Democratic Alliance, versus now the erstwhile UPA that takes a new shape as the Indian National Developmental Inclusive Alliance, or I.N.D.I.A. So the opposition, this grouping of 28 parties calling themselves India and very smartly trying to twist the narrative as India versus Modi or India versus NDA. You heard Rahul Gandhi and Mamata Banerjee trying to allude to that. A terrific Tuesday because we are currently seeing NDA's show of strength with 38 parties and of course the opposition unity, the special Jibes. Prime Minister chairing the NDA meet which is currently underway. The meet has been called to lay on the real roadmap for 2024 polls. In Bengaluru, the opposition coupling up the efforts. It's a committee of contradictions as somebody has put it, but they're all coming together on one platform with one motive. Modi ko harana hai, to defeat Prime Minister Narendra Modi and the BJP to ensure he doesn't come back and the BJP doesn't return the kind of mandate that it returned in 2014 and 2019. BJP and of course the NDA. Now, what is the current footprint of the NDA? Let's try and understand this. The current footprint of the NDA across the length and breadth of Bharat is spread from the north to the south and of course from the west to the east. Let's try and look at that spread before we go across to Payal Mehta live. Can we just go a little full frame? There you go. They are present, as you see, across the north, center, and of course the east, the northeast of our country. If you were to add Jammu and Kashmir, which is under president's rule or central rule, so that's again somewhere indirectly controlled by the center. Towards the south and of course in that belt of Chhattisgarh, Jharkhand, Andhra, Telangana, Karnataka, Tamil Nadu and of course Kerala, they don't return much. Rajasthan going to polls, Madhya Pradesh going to polls, Chhattisgarh going to polls by the end of this year. Will that entirely change? Haryana is still coloured saffron, but will that change when the next elections happen? Punjab is not with the NDA. So how strong are they? We'll get into the numbers in just a bit, but first Payal Mehta live from the sidelines of the NDA meet. Payal, what's the response to the opposition's very clever play of the acronym? They're trying to appropriate India by calling themselves the Indian National Developmental Inclusive Alliance. Anand, first thing first, the response to the NDA, of the NDA as far as the opposition alliance coming together is concerned, that will come in from the Prime Minister in about 15 to 20 minutes from now. Because that address of the Prime Minister to the NDA parties is going to be broadcast live and it is going to be there for everybody to see because, the Prime Minister made a very, very politically heavy speech this morning while he was inaugurating a project. So, the mood that has been set right as far as that is concerned. Now, there are a couple of things that to watch out for. The opposition has taken dig at the BJP saying that they are party limited only to a couple of states.
You saw when the Prime Minister walked in, there was JP Nadda, there was Nephew Rio, there was EPS, there was Eknath Shinde. So all of these people represent different parts of the country. So that is the optic that you've really seen. You've seen how the Prime Minister was really welcomed as well. In a short while from now, we're given to understand, Anand, that there will be a resolution which will be passed by the NDA to come together and work as a cohesive unit in 2027 and 2024 and also in 2047 as well. I have to tell you a very interesting anecdote, Anand. Even as far as the menu for the dinner is concerned, that's also an all-inclusive menu. So of course there is South Indian food, there's North Indian food, there's food from the Northeast, and there's food from the for the Sawan fasting as well. And guess what is the name of the hall in which the food has been arranged? It's called Kautilya. So that also has a lot of significance as well. So everything has been very strategically planned and managed, and you know that the BJP is capable of doing that as well. So the Prime Minister will be taking the fight head on as far as this entire lot of opposition parties are concerned, and you can expect a very, very politically sharp set of remarks coming in from the Prime Minister when he speaks about 15-20 minutes from now. Well, Himanta Biswa Sharma, the Assam Chief Minister, has tried to draw the lines between India and Bharat, saying a colonial name imparted and a civilizational root of Bharat. BJP stands with Bharat. Now, is this going to be the line of thought, or are they not going to get into the wordplay as much as it comes in terms of the electoral mandates? What is going to be perhaps the key directive from the Prime Minister? Is there a tone that he's already set for this meeting? Was that reflected in what JP Nadda, the party president, or the Home Minister Amit Shah said? Anand, the Prime Minister is not going to hold back his words as well, because remember, we were just being briefed off the record by a senior minister in the Modi government, and he was telling us that, Bharat is Bharat and Bharat is what it is. India as a term might not really resonate because India is an Angrezi term. That's what the response of the BJP, at least off the record, has been. You can expect the Prime Minister to really respond in as many words as far as that is really concerned, because they will talk about the fact that it is their government that has looked at taking India forward and taking Bharat forward in particular as well. So obviously the roadmap not only up to 24 but the roadmap up to 2047 is what they're looking at. The Prime Minister on multiple occasions, Anand, has said that this is not a government which is here only for 1 term or 2 terms. You would remember that the Prime Minister said this to his party on a number of occasions, and said this to his Council of Ministers also, including the last one, saying that prepare a roadmap for the next decade and a half to come, because we are going to be in power for that long, and it is our duty to do the seva of the public. So जुट जाओ उसमें, और जब तक आखिरी आदमी बेनिफिशियरी ना उसको लाभ मिले तब तक हमें छोड़ना नहीं है. That's the instruction and that's the mood that the Prime Minister really has been setting. And this is the Prime Minister who started working probably in 2019, once after the election was over. They had already started preparing for 2024. So the team of BJP President JP Nadda, Home Minister Amit Shah, one of the sharpest political minds in the BJP, who, remember, brought the party to such a glorious present that they really came in when he was the party president. And of course, Prime Minister Narendra Modi's relentless and tireless efforts. Well, it does pose how you are going to stitch the narrative, but the opposition also flirting with the lines, trying to appropriate the name of the country, but then calling it the Indian National Developmental Inclusive Alliance. Is that going to make a big difference on ground? Is it going to resonate, or is it going to be mere wordplay and perhaps fodder for us, that is the media? We'll have to see, but there are jibes and counterbarbs that have come through. It was supposed to be the inauguration of the Veer Savarkar Airport in Port Blair, but the Prime Minister using that occasion to lay into the opposition. Just ahead of that meeting, PM Modi launching a scathing attack at this so-called opposition unity, calling them a coalition of the corrupt. Bengaluru meet as hardcore corruption convention is what one of the quotes from his speech. Casteism and limitless corruption is the opposition's guarantee. Once again targeting what could be the peg for the opposition, that is this guarantee schemes. Opposition only motto is of the family and for the family, so Parivarvad comes into play there. People out on bail and scams are given more respect, is what he had said. Opposition leaders mum on the Bengal Panchayat violence, calling out their hypocrisy. But the opposition quick on the counter too, and giving it back to the BJP and the Prime Minister, saying Modi and BJP rattled by the opposition's unity. BJP government wants to destroy democracy. BJP wants to bulldoze the constitution. Institutions are being misused against the opposition. Unemployment and price rise is at its peak. Idea of India is being attacked by ideology of the BJP. These were the counters. Then, the I.N.D.I.A, Indian National Developmental Inclusive Alliance, is the formation of 26 parties. So some are also calling it the Special Jibes.
Several leaders are now under the radar of the agencies for their alleged involvement in scams. Sonia Gandhi and Rahul Gandhi, National Herald case. Enforcement Directorate's charge, money laundering. The status Patiala House Court has granted bail. P. Chidambaram, Congress INX media case. ED and CBI's charge, quid pro quo in FIPB clearance. Status granted bail, proceedings still pending. DK Shivkumar, Karnataka Deputy Chief Minister. ED and CBI's charge, money laundering and DA case. Status questioned and the probe is currently underway. Lalu Prasad, RJD chief, border scam, convicted, out on bail, CTC scam, question, probe continues. Tejaswi Yadav and Rabri Devi, lands for job scam, CBI's charge gave jobs in exchange for land, status questioned and probe is underway. Manish Sisodia of the Aam Aadmi Party, Delhi excise policy, ED and CBI's charge, irregularities in policy formulation, status arrested and investigation underway. Satyendra Jain of the Aam Aadmi Party, ED and CBI's charge, money laundering and DA case, and that is disproportionate assets case. Status arrested, investigation currently underway. Abhishek Banerjee of the Trinamool Congress. Coal smuggling scam, Enforcement Directorate's charge, received proceeds of crime. Status protection from arrest by the Supreme Court. Partha Chatterjee of the Trinamool. SSC scam. ED's charge, irregularities in recruitment. He's been arrested, probe is underway. Sanjay Raut of the Shiv Sena, Uddhav Balasaheb Thackeray. Patra Chault redevelopment case, ED's charge, money laundering, status granted bail by a special court. Senthil Balaji of the DMK, ED's charge, money laundering, status arrested and probe underway. K. Ponmudi of the DMK, ED's charge, money laundering, questioned and probe is underway. But there are graft cases on the BJP and the allies too have been accused of graft. Opposition quick to cite what they call is the BJP staint. Oppositions have named politicians who allegedly evaded probe by agencies after switching loyalties to the Saffron Party, and this washing machine jibe coming back at the BJP. Narayan Rane was previously associated with Shiv Sena and the Congress before floating his own outfit. Maharashtra Swabhiman Paksha is accused of being part of a 300 crore money laundering racket. Shuvendu Adhikari, who left the Trinamool Congress and joined the BJP, accused in the Narada scam. Mukul Roy also quit the Trinamool Congress and joined the BJP. He has also been accused in alleged Sarda chit fund scam and alleged Narda sting case. Himanta Biswa Sarma, Assam Chief Minister, termed as a prime suspect, quote-unquote, in the alleged water supply scam in 2015. Bhavna Gawali, who belongs to this Shinde faction of the now split Shiv Sena, has skipped 5 ED summons, is under the lens of the agency in a money laundering case. Shinde camp leaders like Jashwant Jadhav, Yamini Jadhav are under the radar of the ED for alleged FEMA violations. Another Shinde camp leader, Pratap Sarnaik is accused of money laundering. Earlier, ED also attached assets worth 11.35 crore in the 5,600 crore alleged fraud at the National Stock Exchange Fund. Stock Exchange Limited. Spot Exchange Limited, beg your pardon. The former Karnataka Chief Minister, B.S. Yediyurappa, accused of taking bribes and nepotism in land deals. So, there are a lot of tainted names even within the NDA factions, the 38 parties there and the various leaders. Under the UPA era between 2004 and 2014, 43 opposition leaders faced probe, while under the NDA from 2014 till now, 118 opposition leaders probed by probe agencies. In the UPA area, 29 Congress leaders and their allies were probed, while 6 BJP leaders were probed during the NDA rule. So, does this corruption charge actually stick? Coalition of the corrupt, does this actually stick? Let's go across to our panelists. GVL Narasimha Rao, Rajya Sabha MP, National Spokesperson of the BJP. Abhijit Majumdar, Consulting Editor, First Post. Tehseen Poonawala, Political Analyst. And Mahesh Tapase, Spokesperson of the NCP. Sharad Pawar faction now. Oh, there's a split there too. Namaste, Jai Hind, ladies and gentlemen. Thank you very, very much. Let's start with GVL Narasimha Rao. GVL, now interestingly, in 2014, I'm just starting with another statistic. 23 parties in the NDA, you won 336 seats. Whereas in the UPA, there were 13 parties, they won 59 seats. 2019, you had 21 parties, so you had 2 less, and you won 353 seats. UPA moved from 13 to 18 and they won 94 seats overall. So, आपके वहाँ पे घटक दल वो beg your pardon, जो allies कम होते थे, आपकी सीटें बढ़ती हैं. अभी तो allies ज़्यादा हो गए, 38. That's a good question, but Anand, the expansion of the NDA this time has been done with a view to
add seats where BJP has traditionally not been a major force. So certainly the addition to the seats tally of the NDA, because a number of new allies in the NDA fold they actually are strong in seats where BJP doesn't normally win. So certainly this time the expansion has been done with a view to increase the NDA tally from 350 plus seats to 400, beyond 400. So a lot of people who are wondering why there is an NDA meeting now should understand that BJP is targeting a bigger tally for itself from 303 or presently 301 to 350. Our own tally, and we want to take the NDA tally to beyond 400. And therefore, addition of every seat or every small region and every regional party counts. So we are doing it in a very methodical way. In the mid-90s, the NDA expansion was only with the aim to come to power at the center. Because in 1996, despite being the single largest party, we were not able to have a government. With 182 seats, we had a 13-day government led by Atal Bihari Vajpayee ji. But next time, 1998, with the same tally of 182, we secured a near majority in the parliament. And that's how we came to power in 1998. Even that was not a stable government. But 1999, NDA secured a majority with more than 300 seats. But this time, our target is not only to increase BJP tally to 350, but also add additional seats which are not normally within BJP's reach. For the first time, we have an NDA target number of 350. NDA's target of 350 is something that has been revealed ahead of 2024 by GVL Narasimha Rao. But GVL, you will have to give will you give the opposition some credit? No, it's beyond 400. 350 for the BJP. 350 for the BJP or beyond 400. So you are going beyond 400. That's something which you are announcing today. Phenomenal. Let me ask you, but you will want to give credit to the opposition today, no? I.N.D.I.A. Phenomenal. It's going to give some headache for the narrative spinners within the BJP how to counter this. Every time you will say India, they will say, "Arey, hamara hi baat kar raha hai." GVL? Acha, sorry, there was. I'm saying you would want to give some credit to the opposition. No, I think it's very. I think I can only pity. I don't know if that's an appropriate word, because if somebody thinks you have the name of Digvijay and opposition will give a walkover because you have to prove your name right. Digvijay Singh has he not lost elections? So it's having a name India and expecting all Indians to vote for you is nothing but a big joke. I think they should not be really putting any kind of putting the name of the country in any kind of difficulty. They will be voted out. They will perform poorer than they did in 2019. But if they want to say India lost because we lost, I think it will be nothing but a travesty of honesty. So let me bring in Mahesh Tapase and also Shehzad, Tehseen Poonawala. Sorry, Shehzad is not there. The two brothers never come on a debate together. But they're both. Together. But they're both dear friends. So allow me that little bit of a smile. But Mahesh Tapase, what's in a name? Ya bas naam hi kafi hai. Which side of the fence are you on? I can't hear you. Mahesh Tapase, can you please unmute yourself? I'm sorry. Yeah, go ahead, please. All panelists, all viewers. I think Naam Kafiya is one part, but the intention is more important. I think as the Bengaluru meeting was about to start, we heard a statement coming from none other than the Prime Minister ki Kattar Bhrashtachariyon ki Sammelan ya Hardcore Corruption Convention. I mean, why do you take so much cognizance of us if you're so confident of 2024? I want to ask my friend GVL ji, आप क्यों इतना कॉग्निजेंस ले रहे हैं हमारा? मतलब ठीक है, if you think you are doing so well, 9 years of your rule
or misrule or whatever is there, then why are you so worried about us? You are there in a different program. Your eyes, ears, everything is focused on what these 26 people are doing in Bengaluru, what they were doing in Patna, and what they'll be doing again on 19th probably in Delhi. So I mean, if you are so confident, why do you think even so much? महेश जी, अगर आप लोग 28 पार्टीज का only one agenda, that is to beat one man, and ensure he doesn't become PM. But if that one man talks about you, then you're saying, why are you talking about us? If he doesn't talk about you, you say he doesn't even care about the opposition. If he cares, you're saying, why are you caring about the opposition? एक आदमी का नहीं है कि भारत मुक्त, I mean मोदी मुक्त भारत होना चाहिए या बीजेपी मुक्त भारत होना चाहिए. It is to uphold the constitution, it is to uphold the democratic tradition, it is to rid the central agencies of whatever influence is there of the government. So this is what we're fighting for. We are there to clean the electoral process. Sir, then we have opposing too. But whatever said and done, if you are so much confident on the work that you have done, why keep on talking about us all the time? Yes, we have an agenda. We are in the opposition. We are going to, critically examine, critically evaluate all your schemes and programs, whether it's 13 lakh crores. Yes, after he completes, after he hits. So many other things are there. So we are going to be critical of the government. But if you are confident, don't think about us. Critical about the government is one thing, but obsessed about one man is another thing. Multiple people on that 28 parties said the same thing. Our agenda is to defeat Modi. So much so, sir, they were not even clear about the name. One party tweeted कि हमने सुझाव दिया, फिर delete कर दिया. दूसरे ने बोला हमने सुझाव दिया, फिर delete कर दिया. Then finally the right name came. अभी शुरुआत में इतना लड़खड़ा रहे तो आगे जाके क्या होगा? But GVL Narasimha Rao, please respond. Why is the BJP so worried about if this is an inconsequential grouping in Bengaluru? Ahead of time will be, I'm sure, for the good of the country, and we are here for government. Anand. Yes. We take total cognizance of everything they do because they are helping us create a narrative. Because but for this grouping, but for their noise, it would appear that there is no opposition. Who do we target? I think actually I'm happy that they are all doing all this decibel, all this noise they are creating is giving a narrative to the BJP, and it's showing to the people how somebody who's governing so well, who's taking India on the forward path, how there are people ganging up to somehow defeat him, how they are ganging up to pull down one man. So this is actually the narrative that suits us the best. Why do you want us to ignore it? The more you do this, the better for us. You will say, because we can't fight an election with no opposition visible. You are helping us create that visibility for yourself. Good luck to you. We will certainly, we wish that they continue to remain active in the media. They continue to create weave this narrative of anti-Modi ji, and this is exactly what people will vote against you. Okay. That's point number one. Okay. Point number two, you have no positive agenda. And one important question, Anand, it's a very brief question. You see, the parties which have attended the meeting in Bengaluru today and yesterday, you know what Mr. Sitaram Yechuri said yesterday? He said there is no question of seeing eye to eye with Trinamool Congress. There is no question of aligning with Trinamool Congress. Congress and the left will fight together. We will not have anything to do with Trinamool. So what is this meeting? Is this a social gathering that you are having in Bengaluru? What will they do in Kerala? Will the left and Congress, will NDA, will this India, the so-called INDIA, will they have two candidates per constituency, or will they put up only one candidate? What will happen in Delhi and Punjab? Only yesterday, the AAP and Delhi leaders said, oh, this agreement over this ordinance has nothing to do with our electoral alliances in Delhi, Punjab. So then what are you doing in Bengaluru? Sir, I'll tell you what. Now, with very respectfully, GVL Narasimha Rao, before Tehseen Poonawalla and Abhijit Majumdar come into the debate, the job of the opposition is to target the government. The government's job is not to target the opposition, but to actually talk about what it has done. Now, for you itself, the BJP has made the former Pradesh Congress Committee president the state BJP president in Punjab.
You've made the former right-hand man of Mamata Banerjee one of the leader opposition in Bengal. So you are also depending upon leaders' voices from the erstwhile opposition to also further your cause. This is politics. Sharad Pawar on the other hand, Mahesh Tappa today said no compromising on ideology. But you shook hands with Uddhav Thackeray. At that time, what was it? At that time, what was it? Was it not the compromise, the biggest compromise of ideology when that happened? So, it's a politics is a game of contradictions. But Tehseen Poonawalla, I.N.D.I.A. ये idea अच्छा लगा? Magnificent idea. And like I said earlier on your show and on your colleague's show, this is not about defeating one man. This is about the victory of India. This is about taking India forward. This is about the development of India. To the question the Honorable MP asked on your show, the agenda of the opposition. The agenda of the opposition, Anand, I am spelling it out here, recorded. I've told everything on your show in advance. They will come up in the next few days with their economic version, their economic policies, their national security policies, their foreign policies, and other policies that they will present before the country, before anchors like yourself. And the BJP, which is in government, will have to talk about their policies, their vision, and the people of India will decide which is better, India or NDA. And I think that's the fair way of how elections should be contested. But I want to also register my protest before I end with a statement made by the Honorable Chief Minister of Assam. He said India is a colonial name and Bharat. This division between India and Bharat, because the opening lines of our constitution say India, that is Bharat, shows the division of the NDA, shows the division of the BJP. And this is what RSS leaders did. They opposed our constitution, they opposed our tricolor, and that mindset has come back. It's very dangerous. It's one that divides India, and that division is what India will fight against. Well, Himanta Biswa Sarma is also a former Congress leader. So, yes, and credit to Rahul Gandhi. He has a thought process. He has a thought process, and the fact is, he's single-handedly, wiped out the Congress party almost from all the northeastern states. So you have to consider whose loss it is and whose gain it is. But Tehseen Poonawalla, let me bring in Abhijit Majumdar. If you translate this Indian National Developmental Inclusive Alliance, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास. Does it sound familiar, Abhijit? Good to have you on the show after a while. Thanks, Anand. Lovely to be here. Now, obviously it's a great name. It's the name of our country. But sometimes, Anand, names can backfire if your actions kind of go against it. There are parties in that among those 26 who have actually cast aspersions on surgical strikes after Uri, was sort of in a way insulted our army over Doklam, over Galwan, people who have gone abroad and asked for foreign interference in India. So if you're going to use the name India and do things like this, then it reminds me of, you remember that song from the Devanand movie, Hare Krishna, Hare Ram. Yeah. देखो दीवानो तुम ये काम न करो, नाम का नाम बदनाम न करो. तो यहाँ इंडिया का नाम बदनाम न हो जाए बाद में एक्शन से. So this is, this is one caveat that these guys must remember. But and this is too early, Anand, to analyze what is going to be the impact of coalition, because there are three straightforward aspects to it. What is the glue of these parties? Is it only anti-Modi? Who is going to be the leader? Who is going to be the face? Dulha kaun banega? Three is what is the alternative vision that they have that has never been spelled out. So once they come up with that, but having said that, also almost there are dozens of people in that this thing who have the ED and the CBI on their back. That is probably a common factor between them, and it
it always in politics, it is not about arithmetic but chemistry. Whether the chemistry would work, whether AAP and Congress would work together in Punjab, or left and Congress would work together in Kerala, or CPM and Congress CPM and Trinamool work together in Bengal. It will be for us to see. But having said that, a caveat to BJP as well: do not underestimate, this kind of a thing, Grouping. especially when the opposition parties have their back on the wall. They can stay together, stay united against, the forces of, when we have seen in 89, we have seen in 96, and this time, it is almost an existential crisis it is going to be an existential crisis for many parties if Mr. Modi is going to come back to power with a resounding victory. And Mamata Banerjee has admitted in as many words that if he comes back in 2024, our existence will be in question. She has said it, I think, in the last 7 days, she has said something like that. So, there are several factors. It's a very complex, interesting, developing political situation. Yes, it is. The BJP cannot take it for granted. There are a lot of tweets, there are a lot of posts, a lot of memes already doing the rounds. One aspect, GVL Narasimha Rao, is they've been able to capture the mind space or the conversation space on social media. Will this make an impact on the BJP? Is the BJP mindful of certain coming together of certain groupings? In Bengal, if the votes consolidate of the Trinamool, the Congress party and the left against the BJP, so for you to aim for a 50% plus vote share is going to be very tough. Let's accept it that you have to get above 55% to secure or sweep through states which are critical in terms of the number of seats that they bring to or return to the Lok Sabha. Key states like Bengal, Bihar, Uttar Pradesh, Maharashtra. Anand, these are similar challenges. Certainly, there are similar challenges we have faced in the past as well. This is not the first time. So every time we face such a challenge, we came out in flying colors because we worked out a strategy by which we gained the confidence of the electorate in Uttar Pradesh. In the last polls, Lok Sabha polls, when SP and BSP came together, everyone said, oh, SP and BSP together have more than 50% votes. Yeah. And they will sweep parliament polls in Uttar Pradesh. Did we not prove them wrong? And in 2014 in Bihar, when Nitish Kumar left the NDA on the candidature of Honorable Prime Minister as PM candidate then, we fought without the JDU. And did we not do well in Bihar in 2014? So we certainly have a strategy. In West Bengal, it's unlikely they will come together. If they come together, the votes that go to left parties or Congress will actually come towards the BJP. It will be a blessing for us. Where did the BJP gain so much votes in Bengal? Where were we in Bengal in 2009? We didn't exist in Bengal except a couple of percentage votes. So if we have won 18 parliament seats, it's because that all anti-Congress vote has shifted towards the BJP. And therefore, whatever remains as the left vote today will gravitate towards the BJP if they were to have any kind of tie-up with Trinamool Congress. And such a tie-up may not even happen, but if it happens, it might actually be good news for us. And if in Kerala, LDF and UDF come together and put up joint candidates, it will be a huge opportunity for the BJP to emerge as a real alternative to these two formations. So we see in this challenge, we see an opportunity as well. So certainly while we accept the challenge and will work towards improving our tally, we also see certain opportunities to gain opposition, to gain votes from the opposition camp, like in Bengal or Kerala. Well, Bengal, Kerala, you should also say something about your erstwhile home state of Andhra Pradesh, which is now Andhra Pradesh and Telangana. Where is the BJP there? Sir, south of the Vindhyas, it's a clean slate right now for the BJP.
How many you will win in Karnataka? No, in the no, last 9 no, years, no. what kind of ground have you gained in I'll- AP, Telangana? What ground has the BJP gained in Tamil Nadu? Yes. What ground have you gained in Kerala? Sir, this is going to be a big story. Prime Minister Narendra Modi speaking. एक तरह से एनडीए श्रद्धेय अटल जी की एक और विरासत है जो हमें जोड़े हुए है। एनडीए के निर्माण में आडवाणी जी ने भी बहुत अहम भूमिका निभाई थी और वो आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। हमारे प्रकाश सिंह बादल जी हों, बाला साहब ठाकरे जी हों, जॉर्ज फर्नांडिस जी हों, रामविलास पासवान जी हों, अजीत सिंह जी हों, शरद यादव जी हो, सभी ने अपनी अपनी तरह से एनडीए को मजबूती देने का काम किया। आज प्रकाश सिंह बादल जी और बाला साहब ठाकरे जी के सच्चे अनुयायी भी हमारे बीच में हैं। हाल में ही एनडीए के गठन के 25 साल पूरे हुए हैं। ये 25 वर्ष देश की प्रगति को गति देने और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करने के रहे हैं। यानी राज्यों के विकास से राष्ट्र का विकास, इस मंत्र को एनडीए ने निरंतर सशक्त किया है। इस यात्रा में जो पुराने साथी रहे हैं, मैं उनका तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। भविष्य की यात्रा के लिए जो नए साथी आए हैं, मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं। साथियों, एनडीए के 25 वर्षों की इस यात्रा के साथ एक और सुखद संयोग जुड़ा है। ये वो समय है जब हमारा देश आने वाले 25 वर्षों में एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कदम बढ़ा रहा है। ये लक्ष्य विकसित भारत का है, आत्मनिर्भर भारत का है। कोटि कोटि भारतीय आज नए संकल्पों की ऊर्जा से भरे हुए हैं। इस महत्वपूर्ण कालखंड में एनडीए की बहुत बड़ी भूमिका है। एक तरह से ये नई ऊर्जा से भरी हुई त्रिशक्ति है। एन से न्यू इंडिया के लिए, डी से डेवलप्ड नेशन के लिए, ए से एस्पिरेशन ऑफ पीपल एंड रीजन के लिए, आज देश का गरीब, देश का मध्यम वर्ग, देश के युवा, महिलाएं, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, आदिवासी, सभी का विश्वास एनडीए पर है। हमारे जो समाजशास्त्री हैं, राजनीति शास्त्री हैं और अर्थशास्त्री हैं, वो भी भारत के विकास के लिए एनडीए को एक पॉजिटिव फोर्स के रूप में देख रहे हैं। हमारा संकल्प पॉजिटिव है, एजेंडा पॉजिटिव है, भावना पॉजिटिव है और हमारा रास्ता भी पॉजिटिव है। मैं अक्सर कहा करता हूं कि सरकारें बहुमत से बनती हैं, लेकिन देश सबके प्रयास से चलता है।
इसलिए आज जब हम विकसित भारत के निर्माण में जुटे हैं, तब एनडीए सबका प्रयास की इस भावना का प्रतिनिधित्व कर रहा है। साथियों, हमारे देश में राजनीतिक गठबंधनों की एक लंबी परंपरा रही है, लेकिन जो भी गठबंधन नेगेटिविटी के साथ बने, वे कभी भी सफल नहीं हो पाए। कांग्रेस ने 90 के दशक में देश में अस्थिरता लाने के लिए गठबंधनों का इस्तेमाल किया। कांग्रेस ने सरकारें बनाई, सरकारें बिगाड़ी। इसी दौर में 1998 में एनडीए का गठन हुआ था। लेकिन एनडीए क्यों बना? क्या तब सिर्फ सरकार बनाना या सत्ता हासिल करना ही एनडीए का लक्ष्य था? आप भी जानते हैं, ऐसा नहीं था। एनडीए किसी के विरोध में नहीं बना था। एनडीए किसी को सत्ता से हटाने के लिए नहीं बना था, बल्कि एनडीए का गठन देश में स्थिरता लाने के लिए हुआ था। और जब देश में स्थिर सरकार होती है, तो देश वो फैसले करता है जो कालजयी होते हैं, देश की दिशा बदलने वाले होते हैं। ये हमने अटल जी के कार्यकाल के दौरान भी देखा, और ये पिछले 9 वर्षों में भी हम बार बार देख रहे हैं। भारत में स्थिर और मजबूत सरकार होने से आज पूरे विश्व का भारत पर भरोसा बढ़ा है। साथियों, एनडीए की एक और विशेषता रही है। जब हम विपक्ष में थे, तब भी हमने हमेशा सकारात्मक राजनीति की। हमने कभी नकारात्मक राजनीति का रास्ता नहीं चुना। हमने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपना हर दायित्व निभाया। हमने विपक्ष में रहकर सरकारों का विरोध किया, उनके घोटालों को सामने लाए, लेकिन कभी जनादेश का अपमान नहीं किया। हमने सरकारों का विरोध करने के लिए कभी भी विदेशी मदद नहीं मांगी। हम विपक्ष में रहे, लेकिन हमने देश के विकास में न रोड़े अटकाए और ना ही रुकावट बने। आजकल हम देखते हैं कि केंद्र सरकार की योजनाओं को विपक्ष की कई राज्य सरकारें अपने यहां लागू नहीं होने देती। अगर ये योजनाएं लागू होती भी हैं, तो उन्हें रफ्तार नहीं पकड़ने दी जाती। ये लोग सोचते हैं कि अगर उनके राज्यों में गरीबों को केंद्र की योजना का लाभ मिल गया, तो कैसे काम चलेगा, उनकी राजनीति कैसे चलेगी। मुझे याद है, गरीबों के घर के लिए, हर घर जल के लिए, आयुष्मान भारत योजना के लिए कितनी ही बार विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को मुझे चिट्ठियां लिखनी पड़ती है। लेकिन ये लोग गरीब के कल्याण को भी राजनीतिक नफा नुकसान से ही तोलते रहे हैं। साथियों, जब गठबंधन सत्ता की मजबूरी का हो, जब गठबंधन भ्रष्टाचार की नीयत से हो, जब गठबंधन परिवारवाद की नीति पर आधारित हो, जब गठबंधन जातिवाद
और क्षेत्रवाद को ध्यान में रखकर किया गया हो तो वो गठबंधन देश का बहुत नुकसान करता है। 2014 से पहले की गठबंधन सरकार का उदाहरण हमारे सामने है। तमाम उठापटक के बीच वो गठबंधन सरकार किसी तरह अपने 10 साल खींच पाई, लेकिन देश को क्या मिला? प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी एक आला कमान, पॉलिसी पैरालिसिस, निर्णय लेने में अक्षमता, भांति भांति के पावर सेंटर्स, अव्यवस्था और अविश्वास, खींचतान और करप्शन, लाखों करोड़ों के घोटाले। आपको याद होगा जब भी पिछली सरकार के कुशासन पर सवाल उठते थे तो गठबंधन की मजबूरियां गिनाई जाती थी। बहाना एक ही, गठबंधन के कारण। क्रेडिट लेने के लिए तो हर कोई आगे आता था, लेकिन जैसे ही कुछ गड़बड़ होती थी तुरंत अपने सहयोगियों पर दोष मढ़ दिया जाता था। हम सौभाग्यशाली हैं कि एनडीए की स्थिति इससे बिल्कुल विपरीत है, अलग है। हमारे लिए गठबंधन मजबूरी का नहीं बल्कि मजबूती का माध्यम है। एनडीए कोएलिशन कंपल्सन्स का नहीं बल्कि कोएलिशन कॉन्ट्रीब्यूशंस का प्रतीक है। क्रेडिट भी सबका है, दायित्व भी सबका है। एनडीए में कोई भी राजनीतिक दल बड़ा और कोई भी राजनीतिक दल छोटा नहीं है। हम सभी एक लक्ष्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा है 2014 हो या फिर 2019, भाजपा को बहुमत से अधिक सीटें मिली, लेकिन सरकार एनडीए की ही रही, एनडीए की भागीदारी बनी रही। साथियों, एनडीए के गठन से लेकर ही हमारा संकल्प समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का रहा है। जो वंचित है, जो शोषित है, उसको सशक्त करना हमारी प्राथमिकता है। आज देश की जनता देख रही है कि एनडीए में कौन कौन से दल हैं। एनडीए में जितने भी दल हैं वे समाज के ऐसे वर्गों के बीच काम करते हैं जो वंचित रहे हैं, शोषित रहे हैं। हमारे समूह में गांव, किसान, दलित, पिछड़े, आदिवासियों के बीच काम करने वाले ये सारे नेता यहां हैं। एनडीए में जो दल हैं वो ऐसे क्षेत्रों में काम करते हैं जिनकी पहले दिल्ली में सुनवाई तक नहीं होती थी। एनडीए एक प्रकार से क्षेत्रीय आकांक्षाओं का बहुत ही खूबसूरत इंद्रधनुष है। एनडीए देश के लिए, देश के लोगों के लिए समर्पित है। एनडीए की विचारधारा है नेशन फर्स्ट, सिक्योरिटी ऑफ नेशन फर्स्ट। एनडीए की विचारधारा है प्रोग्रेस फर्स्ट। एनडीए की विचारधारा है एम्पावरमेंट ऑफ पीपल फर्स्ट। साथियों, आपको याद होगा एनडीए की बैठक में हमने संकल्प लिया था कि हम देश की गरीबी को गरीबों की ताकत से ही गरीबी को पनाश करेंगे। इसलिए इन वर्षों में हमारा सबसे ज्यादा जोर
गरीबों को सशक्त करने पर रहा। हमने श्रमयोगी को सम्मान दिया, डिग्निटी ऑफ लेबर पर बल दिया। हमने गरीब को सुरक्षा का एहसास दिया। हमने गरीब को यह विश्वास दिया कि आपके हर प्रयास के पीछे एनडीए सरकार एक भरोसेमंद साथी की तरह आपके साथ खड़ी है। जैसे किसान को अगर सही बीज और खाद पानी मिल जाए तो वो पैदावार का रिकॉर्ड बना देता है, वैसे ही हमने गरीबों को सशक्त करने के लिए उन्हें हर संभव मदद की। इसका परिणाम क्या आया? अभी नीति आयोग की सबसे ताजा स्टडी आई है, आप में से कुछ मित्रों ने उसका उल्लेख भी किया। इस स्टडी के मुताबिक 2015-16 के बाद के 5 वर्षों में ही 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं। इसके पूर्व वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के समय सामने आया कि कैसे बहुत कम समय में ही 40-42 करोड़ लोगों ने गरीबी को परास्त किया है। आईएमएफ के मुताबिक एक्सट्रीम पॉवर्टी यानी अति गरीबी भी भारत में खत्म होने की कगार पर है। ये आईएमएफ का रिपोर्ट कह रही है। साथियों, यहां एनडीए के आप सभी साथी तो जमीन से जुड़े लोग हैं। आप देखिए, जब किसी गरीब को पक्का घर मिलता है तो ये सिर्फ एक छत की जरूरत पूरा नहीं करता, बल्कि ये उस परिवार को सुरक्षा कवच देता है, उसके सपनों को पंख देता है। जब गरीबों को बैंक लोन देने के लिए सरकार अपनी तरफ से गारंटी देती है, तब उनको एक साथी मिलता है, एक सहारा मिलता है। और ऐसे में प्रगति के लिए, तरक्की के लिए उनके प्रयास 2 गुने हो जाते हैं। जब गरीब को हम मुफ्त इलाज का भरोसा देते हैं तो उससे एक परिवार ही नहीं बल्कि उसके आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी सुरक्षित हो जाता है। आप सभी जानते हैं कि पहले जब गरीब परिवार में बीमारी आती थी तो उसके पास 2 ही विकल्प होते थे, या तो अपनी आंखों के सामने अपनों को जीवन के लिए संघर्ष करते देखें, या फिर मकान, दुकान, खेत, खलिहान जो भी थोड़ा बहुत पास में हो उसे बेचें या गिरवी रखें। पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब को गरीब रखने के इस कुचक्र को भी एनडीए सरकार की अनेक योजनाओं ने तोड़ दिया है। गांधी जी से लेकर बाबा साहब आंबेडकर और लोहिया जी तक सभी ने जिस सोशल जस्टिस की, सामाजिक न्याय की अवधारणा की थी, और मैं समझता हूं हम जो कर रहे हैं वो यही सच्चा सोशल जस्टिस है, सामाजिक न्याय है। एनडीए सरकार ने वोट बैंक की राजनीति को विकासवाद की राजनीति में बदला है। ये एनडीए शासन ही है जिसमें छोटे किसानों, रेहड़ी पटरी, फुटपाथ वालों को पहली बार मदद मिल रही है। हमारे विश्वकर्मा साथियों को भी पहली बार ये विश्वास मिला है कि उनके लिए भी कोई सरकारी योजना बन सकती है। साथियों, गरीबी से भारत की इस लड़ाई का एक और पक्ष है। आप सब ये भी जानते हैं कि पहले हमारी माताओं बहनों के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने का चलन कम ही था। वे एक प्रकार से घर के, समाज के आर्थिक फैसलों से कटी हुई थी। देश की आधी आबादी
और परिवार को चलाने वाली ताकत का जब ये हाल हो तो गरीबी से पार पाना आसान कैसे हो सकता था। अब जब बहनों के नाम बैंक अकाउंट खुले, उनके नाम पर घरों की रजिस्ट्री हुई, उनके नाम पर ऋण मिलने लगे, तो एक नया सामर्थ्य समाज में पैदा हुआ। मुद्रा योजना की सबसे बड़ी लाभार्थी हमारी बहनें हैं। स्टार्टअप इंडिया की सबसे बड़ी लाभार्थी हमारी बेटियां हैं। जो देश में 9 करोड़ स्वयं सहायता समूह बने हैं, उनकी सबसे बड़ी लाभार्थी गांव में रहने वाली दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज की बहनें हैं। मैं पिछले दिनों मध्य प्रदेश गया था, एक आदिवासी गांव में गया था। वहां ये स्वयं सहायता समूह की आदिवासी बहनों से मिलना हुआ। जितने समूह थे उन्होंने कहा अब तो हमारी पहचान है, हम लखपति दीदी हैं। हमारा कारोबार इतना है कि आज हम लखपति बन गए हैं। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है साथियों। एनडीए सरकार ने महिलाओं के कल्याण को, उनकी तकलीफ कम करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। जब घर में टॉयलेट बना तो बहनों को सम्मान और सुरक्षा दोनों मिला। जब नल से जल आया, गैस का सिलेंडर आया, तो उनकी परेशानी कम हुई, उनके समय की बचत हुई। इस समय को वो अपने परिवार की आय बढ़ाने में उपयोग कर रही है। ये सिर्फ गरीबी से बाहर निकलने का प्रयास नहीं है, बल्कि वुमेन लेड डेवलपमेंट का रास्ता है जिसे एनडीए सशक्त कर रहा है। आज डिफेंस से लेकर माइनिंग तक हर सेक्टर को बेटियों के लिए खोल दिया गया है। देश को पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति देने का सौभाग्य एनडीए को मिला है। साथियों, 9 साल में हमने केवल एक लक्ष्य के साथ काम किया है कि हम देशवासियों का, खासकर गरीब और वंचित का जीवन बेहतर बना सके। मैं चाहूंगा कि जो लोग एकेडमिक्स से जुड़े हैं, गवर्नेंस स्टडीज से जुड़े हैं, वो इस दिशा में रिसर्च करें। किसी भी सरकार का फ्यूचर विजन क्या है, स्केल ऑफ वर्किंग क्या है, स्पीड ऑफ वर्किंग क्या है, उसकी वर्क स्पिरिट क्या है, इसका मूल्यांकन किया जाए। इन सभी पैरामीटर्स पर एनडीए सरकार का काम न केवल असाधारण साबित होगा, बल्कि एक मॉडल के तौर पर उभरेगा। हम केवल आज की जरूरतों के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को भी सुरक्षित बना रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हमारे लिए बहुत आसान था कि आजादी के 75 साल पूरे होने पर हम भी कोई स्मारक बना देते, दिल्ली में कोई ऐसी इमारत अपने नाम पर खड़ी कर देते थे या कोई मूर्ति लगवा देते। लेकिन हम देश के कोने कोने में 1 लाख अमृत सरोवर बना रहे हैं। हमारा स्केल, हमारा स्पीड, हमारी स्पिरिट और इसकी वजह से हमारे काम का स्कोप ये अभूतपूर्व है। हम विकास भी कर रहे हैं और विरासत को भी सहेज रहे हैं। हम मेक इन इंडिया पर भी बल दे रहे हैं और पर्यावरण की रक्षा भी कर रहे हैं। साथियों, हमारी नीयत साफ है, नीति स्पष्ट है और निर्णय ठोस है। एनडीए सरकार ने बीते 9 वर्षों में भ्रष्टाचार के हर रास्ते को बंद करने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। पहले सत्ता के गलियारों में जो बिचौलियों घूमते थे, हमने उनको बाहर कर दिया है। हमने टेक्नोलॉजी की मदद से लीकेज की हर संभावनाओं को दूर किया है। जनधन, आधार, मोबाइल, इसकी त्रिशक्ति से
हमने करोड़ों फर्जी लाभार्थियों को गरीबों का हक छीनने से रोका है। आप सोचिए, देश में करीब करीब 10 करोड़ ऐसे फर्जी लाभार्थी थे जिनका जन्म ही नहीं हुआ था और जिन्हें सरकारी मदद जा रही थी। ये पैसे मेरे किसी गरीब भाई बहन के थे, किसी आदिवासी के थे, किसी पिछड़े और दलित साथी के थे। ये एनडीए सरकार है जिसने गरीब से हो रही इस लूट को बंद किया है। इन 9 वर्षों में 30 लाख करोड़ रुपए, यह आंकड़ा छोटा नहीं है, 30 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के जरिए सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचे। ऐसा करके हमने गरीबों का कम से कम 3 लाख करोड़ रुपया गलत हाथों में जाने से बचाया है। साथियों, लोकतंत्र में राजनीति अलग अलग विजन को देश के सामने रखने का एक माध्यम होती है, लेकिन हर विजन का, हर विचारधारा का मकसद एक ही होता है, गुड गवर्नेंस और देशवासियों की सेवा। पॉलिटिक्स में प्रतिस्पर्धा हो सकती है, लेकिन शत्रुता नहीं होती। आखिरकार हम एक ही देश के लोग हैं, एक ही समाज का हिस्सा है। लेकिन दुर्भाग्य से आज विपक्ष ने अपनी एक ही पहचान बना ली है, हमें गाली देना, हमें नीचा दिखाना। बावजूद इसके हम एनडीए के सभी साथियों ने हमेशा देश को दलों के हित से ऊपर रखा है। हमने राजनीतिक सौहार्द और शालीनता को बनाए रखने के लिए प्रयास किए हैं। ये एनडीए सरकार ही है जिसने प्रणब दा को भारत रत्न दिया, जो जीवन भर कांग्रेस में रहे थे, लेकिन हमें उन्हें ये सम्मान देने में संकोच नहीं किया। ये एनडीए सरकार ही है जिसने मुलायम सिंह यादव, शरद पवार, गुलाम नबी आजाद, तरुण गोगोई, एमसी जमीर, मुजफ्फर बेग, ऐसे अनेक नेताओं को जो राजनीतिक दृष्टि से हमारे साथ नहीं है, हमारे खिलाफ है, हमने पद्म सम्मान दिया है उन लोगों को। ये नेता भी कभी बीजेपी या एनडीए में नहीं थे, लेकिन हमने देश सेवा में उनके लंबे योगदान को स्वीकार किया, उसे सराहा, उन्हें सम्मानित किया। लोकतंत्र की ये मूल भावना एनडीए की कार्यशैली में आपको हर जगह दिखेगी। इस समय भारत G20 समिट को होस्ट कर रहा है। इससे जुड़े आयोजन देश के हर राज्य में, हर हिस्से में हो रहे हैं। हमने इन आयोजनों को वेन्यू तय करते समय कभी ये नहीं सोचा कि किस राज्य में कौन सी पार्टी की सरकार है। कोरोना के समय भी मैंने लगातार सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ व्यक्तिगत संवाद किया, मीटिंग की। कौन मुख्यमंत्री किस पार्टी का है, ये विचार कभी हमारे बीच नहीं आया। इसी तरह आप उन दिनों को भी याद करिए जब भाषा, लैंग्वेज लोगों को बांटने के एक टूल के तौर पर इस्तेमाल होती थी। लेकिन एनडीए सरकार की सोच देखिए। एनडीए सरकार ने मातृभाषा को बल देना शुरू किया और आज भाषाओं के माध्यम से, मातृभाषा के माध्यम से मेरे युवा डॉक्टर और इंजीनियर बने, इसका अवसर देने का जरिया
भाषा बन रही है। हमने हमारी विरासत को, धरोहरों को ग्लोबल बनाने के लिए लगातार प्रयास किए हैं। यहां पर कई हमारे साथियों ने इसका उल्लेख किया। आज योग वैश्विक एकता का एक माध्यम बन गया है। आज मिलेट्स एक ग्लोबल ट्रेंड बन रहा है। श्री अन्न की चर्चा हो रही है और इसका लाभ हमारे हर क्षेत्र के छोटे छोटे किसानों को मिल रहा है। हम देश के लोगों को जोड़ते हैं, वो देश के लोगों को तोड़ते हैं। साथियों, विपक्ष के लोग जिस गलती को बार बार दोहरा रहे हैं वो है देश के सामान्य मानवीय की समझदारी को वे लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। लेकिन देश की जनता सब कुछ खुली आंखों से देख भी रही है और समझ भी रही है। जनता देख रही है कि ये पार्टियों क्यों इकट्ठा हो रही है। जनता ये भी जान रही है कि वो कौन सा ग्लू है, गोंद है जो इन लोगों को, इन पार्टियों को जोड़ रहा है। किस तरह छोटे छोटे स्वार्थ के लिए मूल्यों और सिद्धांतों से समझौता किया जा रहा है। लोग देख रहे हैं कि केरल में लेफ्ट और कांग्रेस एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, लेकिन बेंगलुरु में दोनों पार्टियों के नेता हाथ में हाथ डालकर मुस्कुरा रहे हैं। लोग देख रहे हैं कि बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस के नेताओं पर उनके